that writers are the real heroes of the film? They go hand in hand because the writer brings in the screenplay and everything, the visions of the idea of the director. They work together and they bring in a beautiful baby like Tanu as Manu returns. And do you think that they are awarded? Are they given their dues? Are they? Are they given their dues? Yeah, of course. They give, I think Anandji and Himanshu, they bring out a lot of Indian essence, what very few people could do that. The real outskirt, like he did Ranjana was Banaras, and now it was like Lucknow, Delhi, Kanpur. We've shot everywhere. The true essence is being seen in this film. हेलो कंगना, मैडी, दोनों सवाल है मेरा। बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जो शादियों पर आधारित हैं। आपको तनु वेड्स मनु के अलावा कौन सी फिल्में जो पसंद आई है? मैं वैसे ज़्यादा फिल्में देखती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं कौन कौन सी फिल्में हैं शादियों पर, लेकिन मुझे हम आपके हैं कौन जो मैंने बचपन में देखी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड आई थिंक वो मेरी आज भी अगर तनु मनु के बराबर ही मुझे वो अच्छी लगती है, खासकर सेकंड पार्ट। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट वेडिंग एंड फैमिली एंटरटेनर। मैडी, I don't know if it fits into the शादी वाला group, but हम दिल दे चुके सनम was a sort of family wedding sort of film, and my big fat Greek wedding, those two. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि भारत सरकार को 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस 1 साल के दौरान ऐसी क्या चेंजेस आपको अच्छे लगे और क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं आगे वाले सालों में? ये मैडी ये आंसर करेंगे। पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट पे सारा दिन रहते हैं और टीवी देखते हैं, इनको बहुत नॉलेज है। इनको बिठाइए यहाँ पे, ये पूरा बजट की चर्चा करेंगे यहाँ पे। और हमेशा की तरह मेरे कंधे से गोली चलाते ये हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल एंडोर्समेंट नहीं है, पर जितने भी चेंजेस हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। हमारे देश को सही तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, हमारा जो सनसेक्स है वो ऊपर चला गया, ये सब जो है स्ट्रेट फैक्ट्स है। तो कहीं मुझे लगता है कि बदलाव आ रहा है और अच्छा बदलाव आ रहा है। कंगना, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये क्या है, हमारी टीम से मैंने कह दिया यही बस। है। हाँ, इसको कोट कर लो। हम पूरी तनु वेड्स मनु का आंसर है ये। Hi, Krishika ma'am. Krishika ma'am, my question is for you, right here. Hi. Today is your Sangeet ceremony for Tanu Weds Manu Returns. So I'd like to know, and the music of the film is doing phenomenally well on the radio and otherwise on the charts. So what is your contribution when it comes to the music of the film? Contribution was with Anand. Anand Rai only has set up this with Krishna, and it was all according to the moods of the film. The vision needed such kind of songs, and lovely, like all beautiful songs we have, which you can hear when you're driving around, which has a lot of meaning. And yes, again I'm talking about my favorite song, Move On, which is a breakup song, and which is the coolest breakup song I've ever heard. So I just enjoy it, and I have a lot of my friends who do enjoy such songs. Like now we are #1 on the Chartbuster. That made me feel very overwhelming. Yes, we are in the right zone after getting such good response from the audience. So even the music is going on the right zone. So it's quite overwhelming for me too. And my Overwhelming. Yes, we are in the right zone after getting such good response from the audience. So even the music is going on the right zone. So it's quite overwhelming for me too. And my second question is for all three of you. It's the Sangeet ceremony. So if you had to choose one song to perform on a Sangeet, apart from songs from Tanu Weds Manu Returns, which one would it be? I think Didi Tera Devar Divana is a very sweet song. And I'd like to dance. Kangana, on your center. कंगना, जैसा कि शादी और संगीत की बात हो रही है, तो हो सकता है कि इस साल या नेक्स्ट ईयर हम देखें कि जो आपके फेवरेट एक्टर हैं रणबीर कपूर, या जो आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनकी भी हमें शादी देखने को मिले। तो क्या कंगना उनकी शादी में डांस स्टेप करते हुए हमें देखी जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, ये बहुत जरूरी है।
से गाने पे कौन से गाने पे आप नाचोगे? हाँ, कौन से गाने पे आप नाचोगे? हाँ, कौन से गाने पे आप डांस करेंगे? मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं कि मैं क्या सीधी सादी लगती हूँ आपको? कुछ भी आंसर दूंगी क्या? I'm sorry, at this moment, I'll break in and ask the last question, who I think is so well deserving. Please put your hands together for the National Award winner, Kangana Ranaut. I want to ask you, how do you do this? You score a sixer every couple of years. This is amazing. I think कोई भी इंसान जो आपके body of work को देखता है, आपके craft को देखता है, you seem to like rediscover yourself. It's amazing how you do this. What is the Raz and how do you feel at this moment? I feel it's a very, very fulfilling experience, and especially at this age, I've got 2 national awards, and I think more than that, the kind of faith people have in me. Tanu Veds Manu Returns is one film where I am after Queen and after my journey of 10 years. I see people actually literally waiting for it, so anticipating it in such a warm way, and I am so overwhelmed with this kind of faith and trust in me, and I'm sure I will not let you all down, and I am trying my best. Thank you. We love you too. May I please invite on stage General Manager Hair Care Hindustan Unilever, Shri Roop Mitra, please to join us on stage. Krishika ji, Krishika. The questions are unfolding. Okay. I can't hear. Hi. लड्डू का टेस्ट Haji, I can't hear. Hi, how are you? Likewise. लड्डू का टेस्ट कैसा रहा? आपकी भी हो चुकी है ना? कौन सा? अच्छा. I think we can request you to have the laddu outside in a while, but as of now, maybe please request the members of media to take their pictures.